नई दिल्ली में XLRI ने फ्रांस की सॉर्बन, बोर्डो, पेरिस नान्ट्रे यूनिवर्सिटी, डैनिश कंसोर्टियम और IIE कंसोर्टियम के साथ बहुउद्देशीय शैक्षणिक सहयोग की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत शैक्षणिक प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और रिसर्च गतिविधियां शुरू की जाएगी। कार्यक्रम में भारत और यूरोप के प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही आपको बता दें, इसे शिक्षा तथा भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने वाला कदम बताया गया। XLRI ने हाल ही में अपनी प्लेटिनियम जुबली पूरी की है और अब वैश्विक स्तर पर उद्योग तैयार प्रोफेशनल्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, भारतीय छात्रों के लिए यह सहयोग खास लाभकारी होगा। इन्हें हेल्थ केयर मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस, डिजिटल बिजनेस और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में संयुक्त रूप से तैयार प्रोग्राम्स मिलेंगे। साथ ही DCAC की वर्कशॉप छात्रों को उद्यमशील सोच और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेगी। सॉर्बन और बोर्डो जैसी शीर्ष फ्रांसीसी यूनिवर्सिटी से मिलने वाली डिग्रियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और छात्रों के लिए वैश्विक करियर अवसर खोलती है। चाहिए आज इसी इवेंट को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारे देश के बच्चों को, इंडस्ट्री को जो चाहिए है, अगले विकसित भारत के जो हमारे उद्देश्य को ये सफल बनाने के लिए, उसके लिए जो हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी बदलाव आना है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ जो है इंडियन प्रोफेशनल्स नहीं, उनको साथ में ग्लोबल सिटीज़न बनना है, क्योंकि आगे जाके जितना भी हो, लोगों को इंडिया जब बढ़ेगा, आगे डेवलप होगा, ठीक है, तब हमारा जो बाकी देशों के साथ रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। और उसी चक्कर में जो है हम लोग को थोड़ा अलग नज़रिया लेके प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट, ये सब करना है। और उसी वजह से हम लोग सब पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और आज हम लोग इस जगह पे आ चुके हैं कि हम लोग कुछ नया दे सकते हैं। इस पहल से कितना बदलाव आएगा? ये देश के हिसाब से देखो तो एक छोटी सी, एक सागर में एक छोटा। देखिए, पहल को हमें 2 तरीके से देखना पड़ेगा। एक होता है रेगुलर 2 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, जो रेगुलर बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, और एक प्रोग्राम होता है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं 15 साल से, 20 साल से। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोदी जी का एक आपने सुना होगा कि हमको उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार करना है। तो अब 15 साल से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बट अगर मेरे को अपने आप को अगले 15 साल के लिए रेलेवेंट रखना है, तो मुझे किसी और तरीके से तैयार होना पड़ेगा। हमको नए स्किल सेट सीखने पड़ेंगे। तो इन सब प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग नए स्किल सेट को पुश करने का कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट को देखें, अभी तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट मोस्टली हमारे डॉक्टर्स करते थे, ठीक है, बट हमको एक स्पेशलाइज स्किल चाहिए। फाइन, अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे, हॉस्पिटल इंडस्ट्री या हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, दिस इज टिपिकली ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट और हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। प्लस हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में मेडिकल टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हमको उसको नए स्केल पे लेके जाना है, तो हमको एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जो उन हॉस्पिटल्स को, उन हेल्थ केयर सिस्टम्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। इस सब टाइप के प्रोग्राम्स हमको उन सब चीज़ों में हेल्प करेंगे। जो संतोष सर ने बोला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगले 20 साल के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है और हमको इंडिया को ग्लोबल स्केल पे लेके जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये उसकी एक छोटी सी पहल है। In India, we initiate a collaboration, and I am very happy to have also a Danish school with us, because we have done that, for example, in Vietnam. In Vietnam, we have a collaboration with Bologna in Italy inside our degrees. So after, under the coordination of XLRI, we are going to see which kind of courses. We have already discussed about the courses, about healthcare, as I said, about consulting, about digital leadership or things like that. So after that, my idea today with XLRI today is to say and to see in which area Sorbonne Business School can support the existing degree of XLRI. So XLRI has a degree with a certain number of hours and credits. So we can say we are going to assume all additional credits to have the XLRI degree and additional credits and certificates from Sorbonne, for example. This is one solution.
The second solution at one moment, after to have experimented this first option, is to say, okay, so inside a master degree, I'm going to take in charge the half of the courses, you are going to take in charge the half of the courses, and finally we are going to deliver a joint degree. So we are initiating a collaboration, and we are going to see little by little to which, in which areas, if we are continuing to develop certificate only, or if one day we go to a master degree. I suppose in some years we can have a joint degree, a common degree, in the area where we have experimented the certificate, and finally in the area where we think the students take the high benefit to have this collaboration in these two visions. After this, as you said, the plasma, I think, and it is also what us, our partner in other countries, is to help students graduate of the country to have a better understanding of the European context, and of course, is for people who have the ambition to be international. This is the first target. The second target is to say, okay, perhaps I have not the ambition to be international, but perhaps what I learn with XLRI and some professor from the Danish school or from my school is something else to impact and modify the local companies. We were in China since 35 years. We are not doing agreement for 2 years or 3 years. The average length of my agreement actually is 20 years. So I'm going to try to do the same and to be at least 20 years or 30 years with XLRI. Just not doing 2 years here, 2 years here, 2 years here. If I do only 2 or 3 years, it's not a good thing for me. We invest a long time in a relationship, in discussion. It's not just to have only 20 students or 40 students and to go. So my ambition is to say, and it's also a demand from, for example, Chinese students, they want to learn from the French feeling of management in order to modify also the management inside pure Chinese company. Because they think that the management, or we have the same concept in management. You have not a different ROE is learned in Danish system. It's the same. It will be the same. In France, so it's the same. So perhaps the critics on this ratio, the critics on this concept, will be different from a country from the other. So we are going to say to students, okay, if you see all the books on that, they are saying the same thing. But me, I have perhaps a different vision. It's acceptable. Can I shortly also thinking from the Danish part, because when we are talking about the end date, so I especially learned that here in India that actually we are not talking about the end date, because you just continue in the next life when we're looking at the human body. So that's actually a European mindset to it, that we have an end date. But I also into this loop, because we are here for good. Thank you. And the fact is that people wait that. They wait to be different. If not, you go to teach with a professor from US or UK, and you don't need a French professor or a Danish professor. If you learn, and us, if we want to teach more or less the same concept, we have a different way to see that. I was in a lot of conference with a US professor and so on in international conference. We speak about the same concept. We have not the same arguments, and we have not the same critic spirit about the concept. So it's different. It's not better. It's not bad. It's different. It is. So if you want to know how to be different, you have to experiment European partners, and it will be different. After that, each people decide if they maintain the position, adapt the position, or change the position. The last thing I would like to say is that I would like to refer to Mr. Moody. When he went to Denmark, he said that Denmark has the skill and India has the scale.
So we are here to bring this intention. Thank you.